how to pick stocks. In this video, in a very few simple steps, I'm going to explain कि कैसे stock market में invest किया जाता है. Okay, so there are basically two simple steps. First is understanding the business from a qualitative perspective, and second is understanding the business from a quantitative or a financial perspective. Okay, so first of all, I'm assuming that we are making investments in halal stocks, in Sharia compliant stocks, and if you want to know how we decide whether a stock is halal or not, make sure you have subscribed to this channel, because very soon we are going to upload a series of videos where we explain in detail how exactly a stock is considered halal for investment or not. Now, moving on to how to pick stocks. So the first step you need to identify before even looking at कि वो company profitable है कि नहीं, या फिर whether I should buy that company or not, the first thing you look at is वो company किस market में है. Okay, is it a market which is promisable? Is it a market which is promising for the future, right? तो for example, अगर कोई company AI में है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है, अगर कोई कंपनी मशीन लर्निंग का कुछ काम कर रही है, या फिर कोई कंपनी ऑटोमेशन का कोई काम कर रही है, सो दीज आर थिंग्स विच विल रियली एक्साइट मी, बिकॉज द फ्यूचर फॉर दीज फील्ड्स इज जस्ट इमर्जिंग, और हर इंडस्ट्री में AI का और मशीन लर्निंग का और ऑटोमेशन का जो है इम्पैक्ट होने वाला है. सो एनी वन हुज वर्किंग इन दीज सेक्टर्स, देयर फ्यूचर इज ब्राइट, एटलीस्ट द फ्यूचर ऑफ देयर फील्ड इज ब्राइट, right? Whereas I don't think I will ever invest in a company which sells newspapers, क्योंकि आजकल हर बंदा न्यूज़ अपने फ़ोन पे फ्री में पढ़ता है. So newspaper does not make a lot of business sense to me. I don't think I will invest in a company which makes stationaries, because in this lockdown, in this pandemic, we have understood कि school going children or college going students or everyone has just switched to electronic mode of teaching as well as learning, whether that is taking notes or taking classes, मतलब हर चीज़ laptop पे, desktop पे, phone पे होती है. So stationery, I don't think the future is very bright for stationery, right? तो मैं इस तरह की चीज़ें देखूँगा कि पहले वो कंपनी किस मार्केट में, is it promising? Okay, for me, pharmaceutical is a very promising sector. Technology is a very promising sector. Manufacturing in general, parts of automotive vehicles or construction is a very, very promising sector. Textile is a good sector. So these are good sectors. मतलब आज से 50 साल बाद भी इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, right? So we know that we are investing in a secure, safe sector, right? तो ये तो एक मार्केट ओवरव्यू हो गया. अब हम देखते हैं उस कंपनी के बारे में. उस कंपनी में ऐसी कौन सी खास बात है कि हम उस कंपनी में इन्वेस्ट करें, राइट? फॉर एग्जाम्पल, आई सेड आई एम वेरी पॉजिटिव ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. नाउ दैट्स अ वेरी स्पेसिफिक नीश. लेट्स जूम आउट अ लिटिल बिट एंड से कि भाई हम IT में बहुत इंटरेस्टेड हैं, राइट? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो सेक्टर है, IT का सेक्टर है, हम उसमें बहुत इंटरेस्टेड हैं. लेकिन IT में तो हज़ारों कंपनीज हैं, सैकड़ों कंपनीज हैं, राइट? बट नॉट ऑल ऑफ देम आर गुड, बिकॉज any Tom, Dick and Harry can just start a company. It doesn't mean it will be successful. It doesn't mean it will be profitable. It doesn't mean it will make good products and services. It doesn't mean it will add value to the economy. Right? So we have to figure out कि company अच्छी है कि नहीं. And a very easy way to do that is to use their products. For example, Apple is a very, very profitable company. It's the largest publicly traded company in the world with a valuation of over $2 trillion. Now, I think आज से 10 साल पहले, even 20 साल पहले, it was easy for a sensible person, for a person like Peter Lynch, to have actually figured out कि Apple was going to be the first company to hit $1 trillion, because there is some sort of magic in their products. I personally don't use Apple products because of some ethical reasons. We'll cover that in some other video. But if you have used a MacBook, if you have used an iPhone, if you have used an iPad, you know that उनमें जो उन प्रोडक्ट्स में जो स्मूथनेस होती है, उनका जो यूज़र
फेस होता है, उसका जो यूज़र एक्सपीरियंस होता है, दैट इज़ जस्ट सो मच सुपीरियर टू जनरली स्पीकिंग अ विंडोज़ डिवाइस और एन एंड्रॉयड डिवाइस. सो दैट स्पीक्स वॉल्यूम इन इटसेल्फ कि जिसका प्रोडक्ट इतना अच्छा है कि देयर इज़ नो अदर कंपनी दैट इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू दैट लेवल, then obviously the company has a moat around it. A company has a fort around it, you know, कि मतलब कोई और उसकी जगह नहीं ले सकता. Similarly Google, right? Google का search engine is a monopoly, and it's not an enforced monopoly. People use it out of their own free will. It's so good, right? And similarly Amazon. Now, just a side note, there are huge ethical considerations when investing in these companies, but right now I'm talking purely from an investment point of view, from a financial point of view. So मतलब ये companies इतना अच्छा perform कर रही थी even before these companies became multi-billion dollar companies, that it was easy to guess that these are the right companies to invest in. So you don't really have to crunch numbers, you don't have to be a financial analyst to know कि you know these are the companies of the future. आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले, you should have guessed if you were in the stock market to you know you should have guessed कि these are the companies of the future. तो ये तो खैर large cap companies हो गई. Even today there are companies which are small caps. Today there are companies which are mid caps, जिसको अभी ज़्यादा लोगों ने नोटिस भी नहीं किया है, ज़्यादा लोग उसके बारे में जानते भी नहीं हैं. But if you are ahead of the game, you would be analyzing their products, you will be analyzing their services, you will be analyzing the moat, you will be analyzing how strong their business is, कि कोई और उनकी जगह नहीं ले सकता. और आज से 10 साल बाद दे विल बी द मल्टी ट्रिलियन डॉलर कंपनीज, राइट? और उस वक्त बहुत ऑब्वियस लगेगा उनका मल्टी ट्रिलियन डॉलर होना, लेकिन कमाल तभी है इफ़ यू कैन फिगर दैट आउट टुडे इटसेल्फ. यू नो, एज वॉरेन बफेट सेज दैट द इन्वेस्टर ऑफ टुडे डज नॉट बेनिफिट फ्रॉम द ग्रोथ दैट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड. आई एम पैराफ्रेजिंग बाय द वे, ठीक है? तो ये तो हो गया बिजनेस के बारे में और कंपनी के बारे में, मार्केट के बारे में. तो ऐसा मार्केट हमें चुनना है जिसका फ्यूचर ब्राइट है. ऐसी कंपनी उस मार्केट में, उस सेक्टर में हमें चुननी है जिसके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, जिसकी सर्विसेज बहुत अच्छी है, जिसका कस्टमर सपोर्ट बहुत अच्छा है, जिस कंपनी का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, उसके वर्क एथिक्स बहुत अच्छे हैं. यू नो, दीज आर द थिंग्स विच क्रिएट लॉन्ग टर्म ग्रोथ, राइट? तो ये तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट हो गया. नाउ मूविंग टू अ बिट क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, अ बिट ऑफ यू नो नंबर क्रंचिंग वाली चीज़ें, ठीक है? तो जो सबसे I'm going to keep this very simple, okay? Make sure you stick till the end of this video. I'm going to make this very simple. तो सबसे जो बुनियादी, सबसे बेसिक चीज़ हमें देखनी है वो ये है कि is the revenue growing? Because ultimately that is what matters from a business point of view. कि पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है? So make sure you just go to any financial website. You can go to ethicainvest.in as well, or there are many other websites. So just see is the जो revenue का ग्राफ है वो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा. Because everything depends on the top line, which is the revenue, okay? So try to look at long term, okay, and as well as short term. So first look at something like a 10-year chart or at least a 5-year chart. Has the revenue been growing, and has the growth been predictable? Has it been consistent? Has it been neat and clean? You know, the more predictable it is, the more consistent it is, the better it is for you as an investor, that the less risky the investment is, right? So make sure these are the things you look at. Then after the top line, look at the bottom line, which is the profit, the net profit of the company, right? Which is the profit after tax, also called PAT, right? Profit after tax. So is that growing? Because ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है लेकिन उसकी इनकम नहीं बढ़ रही, उसका प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा, बिकॉज ऑफ some mismanagement of the financials of the company, some mismanagement of funds, some mismanagement of revenue, some wrong concerns. हो सकता है पैसा बहुत कमा रहे हो लेकिन उसको गलत जगह स्पेंड कर दे रहे हो, गलत जगह इन्वेस्ट कर दे रहे हो, तो बॉटम लाइन के लिए कुछ नहीं बच रहा हो, प्रॉफिट के लिए कुछ नहीं बच रहा हो, राइट? सो मेक श्योर कि प्रॉफिट भी कंसिस्टेंटली बढ़ रहा हो, राइट? आई वुड से एटलीस्ट अ डिसेंट प्रॉफिट ग्रोथ इज एटलीस्ट अराउंड 20% per annum. Right, that's a very good growth. Anything above 20% is good as well. तो उसका जो net profit है, is that growing? अगर 100 crores है 1 year, तो next year it should be 120 crores, and then it should be 142 crores, and then it should be 164 crores. Just do the math yourself, okay? So the earnings should be growing at a good pace. Then look at the PE ratio, which is the price to earnings ratio, right? कि वो कंपनी जितना कमा रही है
उसके कितने टाइम्स में वो बिक रही है, राइट? अगर कंपनी 10 करोड़ रुपए कमा रही है, या लेट्स से कंपनी 100 करोड़ रुपए कमा रही है, and the market valuation of that company is 1000 crores, so the PE ratio is 10 because the market valuation of the company is 10 times its earnings, right? लेकिन अगर वो 100 करोड़ कमा रही है और उसकी वैल्यू 1000 करोड़ के बजाय 40,000 करोड़ है, so the PE is 40, so it's selling 40 times more than its earnings. तो आप किसी कंपनी के लिए उतना ही पैसा देंगे जितना आपको लगता है कि जस्टिफाई किया जा सकता है, ठीक है? तो आप किसी कंपनी के लिए 40 टाइम्स क्यों देंगे पैसा? जब वो 100 करोड़ कमा रही है तो आप उसके लिए 4000 करोड़ क्यों देंगे? आप 4000 करोड़ सिर्फ तभी देंगे इफ़ यू थिंक द ग्रोथ इज ऑल्सो 40% और मोर देन 40%, आइडियली स्पीकिंग, राइट? तो अगर आपकी ग्रोथ 20% है, देन आइडियली द PE शुड ऑल्सो बी 20%. तो जो अर्निंग्स की ग्रोथ है, ईयर आफ्टर ईयर ग्रोथ, या जो CAGR होता है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, सो द अर्निंग्स ग्रोथ शुड मैच द PE, राइट? अगर अर्निंग्स ग्रोथ 20% है तो PE शुड ऑल्सो बी 20%. अगर अर्निंग्स 35 है तो द PE should also be 35. If the PE is less than the growth rate, then that is a great opportunity. That is an undervalued company that you should buy. And if the PE is more than the growth rate, then it's an overvalued company and you should avoid, unless there are other strong reasons to believe that the price will increase for some other reasons. अब अर्निंग्स हमने देख ली. अब एक चीज़ और हमें देखनी है, वो है कैश फ्लो, ठीक है? ऐसा हो सकता है कि कंपनी बहुत प्रॉफिटेबल है लेकिन वो कैश नहीं जनरेट कर रही है, ठीक है? क्योंकि इफ़ यू लर्न अकाउंट्स देन प्रॉफिट एंड कैश आर नॉट एग्जैक्टली द सेम थिंग. You can have a lot of profit, but that doesn't mean you will have equal amount of cash, because a lot of the profit is on accrued basis. And if you know accounting, you'll understand what I'm meaning, what I'm trying to say. But long story short, जितना उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है उतना ही उसका कैश भी आना चाहिए, या नियर अबाउट उतना आना चाहिए, ठीक है? अगर उससे कम कैश आ रहा है, इसका मतलब उनका कैश मैनेजमेंट, उनका कैपिटल मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, ठीक है? तो मेक श्योर कि उनका अगर प्रॉफिट अच्छा है तो उनका कैश फ्लो भी अच्छा है. सिंपल सी बात है, कैश ज़्यादा है, प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए, प्रॉफिट ज़्यादा है, कैश ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है? लेकिन ऑल्सो मेक श्योर इन अ वेरी सर्टेन सिचुएशन कि कैश फ्लो बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए. अगर प्रॉफिट से ज़्यादा कैश फ्लो है, इसका मतलब दे आर वो एक्स्ट्रा पैसा जो आ रहा है वो मे बी दे आर यूजिंग डेट और अदर सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग टू गेट दैट एक्स्ट्रा कैश, विच इज़ ऑल्सो नॉट अ वेरी गुड साइन. और आखिरकार कंपनी एक्स्ट्रा कैश अपने साथ क्यों रखेगी इफ़ यू कैन ऑलवेज इन्वेस्ट दोज कैश इन मोर प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स और गिव इट आउट एज डिविडेंड्स? तो बहुत ज़्यादा एक्सेस कैश भी नहीं अच्छा है. देयर शुड बी अ वेरी हेल्दी रेशियो ऑफ कैश फ्लो टू प्रॉफिट. तो मेक श्योर दैट इज मेंटेन्ड एज वेल. द क्लोजर इट इज टू 1, द क्लोजर द कैश flow is equal to the profit, the more normal a company is behaving. So these are some of the things we look at. The market of the company is operating and should be good, should have a bright future. The company itself should have some unique features जिससे उसके प्रोडक्ट्स और उसकी सर्विसेज जो हैं, जिससे पता चले कि उसके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बहुत ख़ास हैं, बहुत अच्छे हैं और लोग उसको पसंद करते हैं. So people will buy more of those products, people will buy more of those services, राइट? उसका रेवेन्यू बढ़ना चाहिए, उसकी अर्निंग्स बढ़नी चाहिए, उसका कैश फ्लो बढ़ना चाहिए, और उसका PE शुड बी जस्टिफाइड. तो जितनी उसकी अर्निंग्स ग्रोथ रेट है उतना ही उसका PE होना चाहिए. These are some of the very basic, very simple points to keep in mind when selecting a stock. If you have any questions, I'll love to answer those questions. So make sure you leave them down in the comment section below. And I'll see you next time. Assalamu alaikum.